Hare Krishna and pranams everyone. So welcome to Srimad Bhagavatam sessions. So let me share the quiz results for our last session. Last session we had a very long purport and a very long shloka as well, 26 to 30, 16th chapter. And so we have very less quiz participants today. So requesting everyone to link has been shared in the chat. So for today we have Jeet Mataji as number one position with one wrong answer. And then she's giving the quiz. And then my mother, two wrong answers. Okay. So congratulations to Jeet Mataji. So today we have His Grace Vrindavan Brundar Prabhu, who will take the session, and requesting Prabhuji to kindly share his screen. Prabhu, can you share your screen? Yes, Prabhu, I'll share. Thank you, Prabhu. Krishna. So last class we read till chapter 16, sloka 30th. So we are reading the chapter how Parikshit Maharaj received the age of Kali. So before beginning, we'll just have pranam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire. Nashtrayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhakti Nashtaki. Srila Prabhupada ki jai, Granth Srimad Bhagavatam ki jai. So before starting, we'll just recap. हमने last कुछ classes में क्या पढ़ा. So we read that how Parikshit Maharaj met Master of Kali, who was hurting the leg of the cow and the bull, and how sages जो नैमिषारण्य में sages they asked Maharaj Parikshit why Maharaj Parikshit just punished Kali and did not kill him. मतलब इस चीज के लिए तो उनको कली को मार देना चाहिए था, but why he just punished him? So they were interested to know about those topics, and they also asked if they are in relation to Lord Krishna, then only tell us. So they were just interested in topics, hearing topics related to Krishna. So इससे हमें भी सीख मिलती है कि हम भी कोई भी टॉपिक अगर कृष्णा से रिलेटेड हो तो वही हमें सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, otherwise we should not be interested. Also, we read that when Maharaj Parikshit learned about the symptoms of Kali have started infiltrating the jurisdiction of Kuru Empire, so उन्होंने अपना he took up his bow and arrows and conquered all directions of the earthly planet. He actually went on to conquer everywhere so that he can control the symptoms of Kali. So wherever he visited, हमने पढ़ा कि he heard the glories of his forefathers who were the devotees of Lord. Pandavas की बात हो रही है यहाँ, and the glorious acts of Lord Shri Krishna. फिर जहां भी जाते थे तो लोग उनको उनके बारे में बताते थे. फिर सूत गोस्वामी tells that when Maharaj Parikshit was passing his time hearing and thinking about those pastimes of Lord Krishna, तो कलयुग इतने में कलयुग स्टार्ट हो गया, एंड जो ब्राह्मणिकल कल्चर था that started getting lost, and due to this जो अर्थ थी in the form of cow and religious principle जो धर्म in the form of bull, they got neglected, and उसकी वजह से जो people of and because of that only the people of Kalyug are neither peaceful nor joyful. फिर हमने पढ़ा कि जो बुल हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं मदर अर्थ से, जो रिलीजियस प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ बुल इज आस्किंग मदर अर्थ व्हिच इन द फॉर्म ऑफ काउ कि
जिसमें जिसमें बेसिकली वो क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली उसमें वो कलयुग के सिम्टम्स ही बता रहे होते हैं क्वेश्चन पूछ के। जैसे कि धर्म के 3 स्तंभ गिर जाते हैं कलयुग में, फिर मीट ईटर्स बढ़ जाते हैं, मतलब वो पूछ रहे हैं क्या मीट ईटर्स बढ़ गए हैं, क्या कोई सेक्रीफाइस नहीं किए जाते हैं, और बहुत ही खाने की भी शॉर्टेज हो रही है और सूखा पड़ने लगा है। तो ये सब सिम्टम्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और बोलते हैं कि इस वजह से आप परेशान हो क्या, फ्रॉम फ्रॉम काउ, फ्रॉम मदर अर्थ हु इज इन द फॉर्म ऑफ काउ। और फिर हमने पढ़ा कि in one of the purport की जो sacrifice recommended for Kalyuga is the chanting of the holy name of the Lord, and in this way, और फिर religious principle और जो धर्म थे वो he was still asking question from Mother Earth. So Mother Earth आंसर करती हैं questions by mentioning how there was happiness all over the universe when Lord Krishna was present on the face of earth. But अब क्योंकि वो चले गए हैं, and in his absence the age of Kali has spread its influence. So I am very sorry to see this conditional state of existence. तो यहाँ पर हमने खत्म किया और अब हम नेक्स्ट श्लोका से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् नृषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I am thinking about myself and also, O best amongst the demigods, about you, as well as about all the demigods, sages, denizens of Pitraloka, devotees of the Lord, and all men obedient to the system of Varn and Ashram in human society. तो ये जो Mother Earth हैं in the form of cow, she is answering the questions which were put up by Bull, who's the religious principle. So I'll read the purport. To effect the perfection of human life, there is cooperation between men and demigods, sages, denizens of the Pitralok, devotees of the Lord, and the scientific system of Varn and Ashram orders of life. The distinction between human life and animal life therefore begins with the scientific system of Varn and Ashram, guided by the experience of the sages in relation with the demigods, gradually rising to the summit of re-establishing our eternal relation with the Supreme Absolute Truth, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna. When God made Varnashram Dham, which is strictly meant for developing animal consciousness into human consciousness and human consciousness into godly consciousness, is broken by advancement of foolishness. The whole system of peaceful and progressive life is at once disturbed. In the age of Kali, the first attack of the venomous snake strikes against the god-made Varnashram Dharma, and thus a person properly qualified as a Brahman is called a Shudra, and a Shudra by qualification is passing as a Brahman, all on a false birthright claim. To become a Brahman by birthright claim is not at all bona fide, although it may be a fulfillment of one of the conditions. But the real qualification of a Brahman is to control the mind and the senses and to cultivate tolerance, simplicity, cleanliness, knowledge, truthfulness, devotion, and faith in the Vedic wisdom. In the present age, consideration of the necessary qualification is being neglected, and the false birthright claim is being supported even by a popular, sophisticated poet, the author of Ramcharitmanas. This is all due to the influence of the age of Kali. Thus, Mother Earth, represented as a cow, was lamenting the regrettable condition. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पहला जो सिम्टम है ये है कि जो वर्ण और आश्रम जो डिविजन्स भगवान क्रिएट करते हैं,
those are actually the duties which are performed according to the system of 4 varnas and 4 ashrams. तो जो भगवान शास्त्रों के थ्रू एस्टेब्लिश करते हैं तो वो सबसे पहले खत्म हो जाता है, और उसके खत्म होने से जो ब्राह्मण है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रह जाता शूद्र ब्राह्मण। जो जो शूद्र है वो अगर ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है बट बाय क्वालिटीज ही शूद्र, तो भी वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, बट उनके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं होती हैं ब्राह्मण की। तो इसकी वजह से सारा सिस्टम खराब हो जाता है और सब कुछ डिग्रेड हो जाता है इन द एज ऑफ कलयुग। और जो वर्णाश्रम धर्म है, जैसे हमें पता है कि 4 वर्णाज होते हैं और 4 आश्रम्स होते हैं। 4 वर्णाज जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और 4 आश्रम जैसे स्टूडेंट लाइफ, हाउस होल्ड, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 आश्रम होते हैं। तो ये जो होते पहले के युगों में ये डिविजन्स होते थे, बट अब कलयुग में ऐसा कुछ रह नहीं है। एवरीबडी इज ऑन द लेवल ऑफ शूद्र, सो सब कुछ डिग्रेड हो गया। दैट्स व्हाई जो मदर अर्थ हैं वो भी यही बताना चाह रही हैं कि जो कलयुग है इसकी वजह से सबको सफर करना पड़ रहा है, सारी ह्यूमन सोसाइटी। सो we'll move to next. If somebody wants to read, can raise their hand. ब्रह्मदव ब्रह्मदव बहुतिथम यदपांग मोक्ष ब्रह्मदौ बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामास्तपः संचरन् भगवत प्रपन्ना शाश्रीसवास शाश्रीसवास्मरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते अनुरक्ता तस्याहं तस्याहं अब्ज कुलिशांकुश केतु केतैः श्रीमत्पदैर्भगवता समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजदुत्संयतिं तदन्ते। Translation: Lakshmiji, the goddess of fortune, whose glance of grace was sought by demigods like Brahma, and for whom they surrendered many a day unto the personality of Godhead, gave up her own abode in the forest of lotus flowers and engaged herself in the service of the lotus feet of the Lord. I was endowed with specific powers to supersede the fortune of all the 3 planetary systems by being decorated with the impressions of the flag, thunderbolt, elephant driving road, and lotus flower, which are signs of the lotus feet of the Lord. But at the end, when I felt I was so fortunate, the Lord left me. तो ये जो भगवान के जो लोटस फीट हैं उनके डिस्क्रिप्शन दे रही है मदर अर्थ कि हाउ व्हेन ही यूज्ड टू वॉक ऑन माय सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ही यूज्ड टू decorate the earth surface with the impressions of his lotus feet. So इस असीम को पुत्र प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। कृष्ण प्रभु जी। Purport. The beauty and opulence of the world can be enhanced by the grace of the Lord and not by any man-made planning. When the Lord Shri Krishna was present on this earth, the impressions of the special signs of his lotus feet were stamped on the dust, and as a result of this specific grace, the whole earth was made as perfect as possible. In other words, the rivers, the seas, the forests, the hills, and the mines, which are the supplying agents for the necessities of men and animals, were fully discharging their respective duties. Therefore, the riches of the world surpassed all the riches of all other planets in the 3 planetary system of the universe. One should therefore ask that the grace of the Lord always be present on earth so that we may be filled with his causeless mercy and be happy having all necessities of life. One may ask how we can detain the Supreme Lord on this earth after his mission is fulfilled and he has left this earth for his own abode. The answer is that
There is no need to detain the Lord. The Lord, being omnipresent, can be present with us if we want Him at all. By His omnipresence, He can always be with us if we are attached to His devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. There is nothing in the world with which the Lord is disconnected. The only thing we must learn is to excavate the source of connection and thus be linked with Him by offenseless service. We can be connected with Him by the transcendental sound representation of the Lord. The holy name of the Lord and the Lord Himself are identical, and one who chants the holy name of the Lord in an offenseless manner can at once realize that the Lord is present before him. Even by the vibration of the radio sound, we can partially realize sound relativity, and by resounding the sound of the transcendence, we can verily feel the presence of the Lord. In this age when everything is polluted by the contamination of Kali, it is instructed in the scriptures and preached by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu that by chanting the holy name of the Lord, we can at once be free from contamination and gradually rise to the status of transcendence and go back to Godhead. The offenseless chanter of the holy name of the Lord is as auspicious as the Lord Himself, and the movement of pure devotees of the Lord all over the world can at once change the troublesome face of the world. Only by the propagation of the chanting of the holy name of the Lord can we be immune from all effects of the age of Kali. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब देर इज नो नीड टू डिटेन द लॉर्ड, क्योंकि द लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही कैन बी प्रेजेंट विद अस इफ वांट हिम एट ऑल। बट उसका तरीका क्या है? We have to be engaged in the devotional service by hearing, chanting, remembering, and the most important, प्रभुपाद अगर हम कितने भी पर्पट्स पढ़ते हैं, इतनी बार प्रभुपाद ज्यादातर पर्पट्स में चैंटिंग 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 पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स होली नेम, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज holy names. So we can at once associate with Lord by if we can chant offenseless in offenseless manner. So Lord जो है वो चले गए after fulfilling his mission on earth, but कलयुग में हम मेन पॉइंट यही है इस पर्पट से लेने का कि कलयुग में हम भगवान से कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जो कि एक श्लोका भी आता है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, ओनली द होली नेम ऑफ द लॉर्ड is what can deliver the people of Kali-yuga. So we should realize and should chant at least some fixed amount of rounds so that we can feel the presence of Lord in our daily lives. Yes, प्रभु जी श्लोक आप पढ़ दीजिए। Sorry, श्लोक आप पढ़िए प्रभु जी, मैं तो I can read further. श्लोक पढ़ते हैं, बाकी rest I will read. Okay, यो वै ममाति भर्माशुर्वंशराज्ञा वंशराज्ञम् अक्षोहिणी शतं पानुददात् मत्तन्त्रः उपदात् आत्मतन्त्रः त्वां दुस्थम् उन्पदम् आत्मानि पौरुषेण सम्पाद्यन् यदुषु रम्यम अभिभ्रत अंगम। Yes, Hare Krishna. Translation. O personality of religion, I was greatly overburdened by the undue military flexences arranged by atheistic kings, and I was relieved by the grace of the personality of Godhead. Similarly, you were also in a distressed condition, weakened in your standing strength, and thus he also incarnated by his internal energy in the family of the Yadus to relieve you. Purport. The Asuras want to enjoy a life of sense gratification even at the cost of others' happiness. In order to fulfill this ambition, the Asuras, especially atheistic kings or state executive heads, try to equip themselves
with all kinds of deadly weapons to bring about a war in a peaceful society. They have no ambition other than personal aggrandizement, and thus Mother Earth feels overburdened by such undue increase of military strength, by increase of the Asuric population. By increase of the Asuric population, those who follow the principle of religion become unhappy, especially the devotees or devas. In such a situation, the personality of Godhead incarnates to vanquish the unwanted asuras and to re-establish the true principles of religion. This was the mission of Lord Shri Krishna, and he fulfilled it. Hare Krishna. So Hare Krishna, thank you. So Pavitranaaya Sadhuna Vinashaya Cha Dushkrita धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भगवत गीता 4.8 में भी बोलते हैं कि साधुओं को पवित्र करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, और दुष्कृताम जो कि आसुरिक पॉपुलेशन है उनको विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अपीयर होता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो वही बेसिकली मदर अर्थ इज रिमेम्बरिंग कि हाउ they were the mother earth, and also the personality of religion was relieved by the grace of the personality of Godhead, और कैसे उन्होंने प्लान करके जो महाभारत का युद्ध करवाया और इतने मिलिट्री फैलेंसेस थे उनको जो भी आसुरिक पॉपुलेशन थी उसको बेसिकली अर्थ को रिलीव करवाया हम सबसे। तो वही बता रहे हैं, भी याद कर रहे हैं। So we'll move to next. कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य, कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य, प्रेमावलोका रुचिर समीतवल्गुजल्पहि, स्थैर्यं समानम अहरन मधुमानिनाम, रोमोत्सवो मम यदंग्री वितंकिताया। Prabhuji, continue. Yeah, I can. If there are no others, I can. Translation. Who therefore can tolerate the pangs of separation from the Supreme Personality of Godhead? He could conquer the gravity and passionate breath of his sweethearts, like Satyabhama, by his sweet smile of love, pleasing glance, and heartly appeals. When he traversed my earth's surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet, and thus would be sumptuously covered with grass, which appeared like hair standing on me out of pleasure. Purport. There were chances of separation between the Lord and his thousands of queens because of the Lord's being absent from home. But as far as his connection with earth was concerned, the Lord would traverse the earth with his lotus feet, and therefore there was no chance of separation when the Lord left the surface of the earth to return to his spiritual abode. The earth's feeling of separation were therefore more acute. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. So Mother Earth is again telling कि जो Lord हैं, he could conquer the passionate wrath of his sweethearts, wives like Satyabhama, but जो Earth है, he was always in touch with the Lord because Lord was walking on the earth. So जो मदर अर्थ हैं वो देखिए भगवान ने अपनी फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन को बता रही हैं यहाँ पर, एंड हाउ ब्यूटीफुली शी इज टेलिंग दैट कि जो लॉर्ड कृष्णा वॉक्ड ऑन अर्थ सरफेस, आई वाज कवर्ड विद ग्रास, इट वाज लाइक माय हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड। और जब when we get extreme happiness or ecstasy, sometimes our hair stand on end. So that feeling is actually described by Mother Earth here. कि भगवान जब अर्थ पर चलते तो उनके जो रोंगटे हैं, जो हेयर्स हैं एंड पे हाथ के, वो खड़े हो जाते थे। कृष्णा, नेक्स्ट श्लोका। त्योरेवं कथयतो पृथ्वीधर्म योस्तदा परीक्षीणां राजर्षि
praptya prachin saraswatim. So I'll read the translation. While the earth and the personality of religion were thus engaged in conversation, the saintly King Parikshit reached the shore of the Saraswati river, which flowed towards the east. Purport: thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 16th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled How Parikshit Received the Age of Kali. So अब आगे का हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वी हैव सम टाइम. सो चैप्टर 17, punishment and reward of Kali. So we'll read first shloka. Sut uvacha tatra gomitthunam raja hanyaman manathavat dandahastam cha vrishlam tadarshe nriplanchanam. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation. Suta Goswami said, after reaching that place, Maharaj Parikshit observed that a lower caste, Shudra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club, as if they had no honor. Purport. The principal sign of the age of Kali is that lower caste Shudras, that is, men without Brahminical culture and spiritual initiation, will be dressed like administrators or kings, and the principal business of such known Kshatriya rulers will be to kill the innocent animals, especially the cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. In the Bhagavad Gita 1844, it is said that the Vaishyas are meant to deal in agriculture, cow protection, and trade. In the age of Kali, the degraded Vaishyas, the mercantile men, are engaged in supplying cows to slaughterhouses. The Kshatriyas are meant to protect the citizen of the state, whereas the Vaishyas are meant to protect the cows and bulls and utilize them to produce grains and milk. The cow is meant to deliver milk and the bull is meant to produce grains. But in the age of Kali, the Shudras class of men are in the posts of administrators, and the cows and bulls, or the mothers and the fathers, unprotected by the Vaishyas, are subjected to the slaughterhouses organized by the Shudra administrators. Hare Krishna. Hare Krishna. So these are all the symptoms of Kalyug कि जो शूद्र हैं, एक्चुअली एवरीबडी शूद्र, प्रभुपाद जी बोलते हैं इन कलयुग एवरीबडी शूद्र एंड most of the population in Kalyug does not treat cow or bull properly, क्योंकि हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो वर्ण आश्रम धर्म जो शास्त्रों के हिसाब से जो भगवान ने दिया है वो बिल्कुल कलयुग में आकर खत्म हो गया है. और जैसे भगवद गीता 1844 का यहाँ पे प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं, जहाँ भगवान बोलते कृषि गो रक्षय वाणिज्यम. तो जो वैश्याज हैं, दे आर मेंट टू बेसिकली डील इन एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन एंड ट्रेड. बट अभी जो ये डिविजन्स हैं, ये सब वर्ण आश्रम जो हैं वो सब खत्म हो गए हैं, और इस वजह से अधर्म बढ़ रहा है, और जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए काउस को, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दैट they are not getting in this age. So everything is getting degraded day by day. Next. Risham mrnal dhavalam mehnatim eva bibhatyatam vepamanam padaikena siddhantam shudrataditam. Yes, Translation. The bull was as white as a white lotus flower. He was terrified of the Shudra, who was beating him, and he was so afraid that he was standing on one leg, trembling and urinating. Purport. The next symptom of the age of Kali is that principles of religion, which are all spotlessly white, like the white lotus flower, will be attacked by the uncultured Shudra population of the age. They may be descendants of Brahmana or Kshatriya forefathers, but in the age of Kali, for want of sufficient education and culture of Vedic wisdom,
Such a Shudra-like population will defy the principle of religion, and persons who are religiously endowed will be terrified by such men. They will declare themselves as adherents of no religious principles, and many isms and cults will spring up in the Kali Yuga only to kill this spotless bull of religion. The state will be declared to be secular or without any particular principle of religion, and as a result, there will be total indifference to the principles of religion. The citizens will be free to act as they like without respect for sadhu, shastra, and guru. The bull standing on one leg indicates that the principles of religion are gradually diminishing. Sorry. The bull standing on one leg indicates that the principles of religion are gradually diminishing. Even the fragmental existence of religion principles will be embarrassed by so many obstacles as if in the trembling condition of falling down at any time. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पर फिर से वही सिग्निफाई कर रहे हैं कि कलयुग में जो बुल है वो ही इज ऑल्दो इज एज वाइट एज लोटस, वाइट लोटस फ्लावर, बट ही इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, क्योंकि जो धर्म के 4 स्तंभ हैं उसमें से एक ही स्तंभ 1/4 रह जाता है कलयुग में। सो इट इज सिग्निफाइंग दैट। और प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि जो भी रिलीजियस हमारे हम अगर कुछ भी रिलीजियस करना चाहेंगे तो द पॉपुलेशन ऑफ कलयुग विल बी देयर टू टेरिफाई अस। ऐसा हमने देखा है पास्ट में, जब मुगलों का राज हुआ भारत में तब ये सब होने लगा था। दे ट्राइड टू टेरिफाई द रिलीजियस पीपल ऑफ इंडिया। इवन ब्रिटिशर्स आल्सो डिड दैट। और हम चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हैं कि महाप्रभु के टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था कि जो संकीर्तन आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई थी। तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ कलयुग। बाद में तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ओपनली कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। आफ्टर 10,000 years ऑफ कलयुग देयर विल बी नो टेम्पल ओपनली ऑपरेटिंग। तो इसलिए तो भगवान ने अपने जो नाम जप में इतनी पोटेंसी डाल दी है कि उसके माध्यम से हम कहीं भी किसी भी स्थिति में, घर में भी, क्लोज्ड एक अंदर भी हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अभी तो हम फिर भी इतने लकी हैं कि हम टेम्पल जा सकते हैं, भक्तों के संग में हैं, ओपनली कीर्तन कर सकते हैं। और प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, बस हमें अपने नाम जप में श्रद्धा और रुचि बढ़ानी है, जिससे कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करके वापस जा सकें। सो वी ऑल कैन ट्राई टुगेदर। सो आई थिंक टाइम भी हो गया है और विल एंड द सेशन हियर। अगर किसी को कुछ कमेंट है तो, कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। प्रभु जी जो 4 प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन है, तो जैसे पिछली क्लासेस में भी हम इसको पढ़ रहे थे या डिस्कस कर रहे थे, हर एक युग में एक एक लेग डिस्ट्रॉयज, ऐसा ही कुछ है ना अंडरस्टैंडिंग? प्रभु जी 2 जगह, एक अभी तो यही लिखा हुआ है, बट आगे जब भागवतम में हम पढ़ेंगे डिटेल में तो एक्चुअल ये है कि जो जितनी भी लेग्स है ना वो 1/4 हो गई है। मतलब जैसे इट्स नॉट, ये भी लिखा हुआ है कि अब जो कलयुग में सिर्फ ट्रुथफुलनेस रह गया है, बट बाद में भागवतम में ये भी आता है कि हर एक जो लेग है वो 1/4 रह गए। जो मर्सी है वो भी 1/4 हो गई है, और जितने भी हमारे लेग्स हैं वो 1/4 रह गई है कलयुग में। बट फिर द्वापर में तो मतलब भगवान जब खुद ही थे तब तो मतलब इट वाज सपोज्ड टू बी 100% ना, जब भगवान थे तो तब यस फिर यस, तब तो सब ठीक ही था प्रभु जी। और फिर बट 100 से फिर एकदम मतलब अगर 25% पे इफ यू आर टेकिंग कट डाउन या रिडक्शन, तो इट शुड बी नॉट तो वन। भगवान जब प्रभु जी जब आए तो भगवान क्यों आए? क्योंकि अधर्म बढ़ रहा था। तो भगवान आए और जो भी उनका मिशन था उन्होंने अकम्प्लिश किया। उससे पहले तो ऑलरेडी जो धर्म है उसके जो स्तंभ है वो ऑलरेडी
1/3 जो भी हैं उसमें हो गए थे। और फिर भगवान आए तो उन्होंने रीएस्टेब्लिश किया, कुछ टाइम के लिए वो ठीक चला परीक्षित महाराज, और फिर जब कलयुग की एंट्री होती है तो फिर वापस से वही सब स्टार्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट आई रेड इन भागवत। ठीक है, got it। ठीक है, मैं इसमें आई वाज थिंकिंग कि जब भगवान आते हैं तो फिर अगेन एवरीथिंग बिकम्स 100%, फिर हाँ, मतलब वो एग्जैक्टली तो पता नहीं प्रभु जी मुझे कि एग्जैक्टली 100% मे बी वी कैन कंफर्म विद राज प्रभु, बट ये पढ़ा कि उस टाइम के लिए एवरीथिंग वाज, जैसे अर्थ इज ऑल्सो, जैसे अर्थ और बुल के बीच की जो डिस्कशन है उससे हमें यही पता चल रहा है कि एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, मतलब सब खुश थे, एवरीथिंग, सब जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी फॉरेस्ट हैं, रेन्स है, एवरीथिंग वाज प्रॉपर। टिल महाराज युधिष्ठिर एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, मतलब यस, जो यस, इवन बिकॉज टिल ऑफ महाराज परीक्षित एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, बट जब कलयुग आए, महाराज परीक्षित, हमने पढ़ा है ना पीछे कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को कंट्रोल करके रखा हुआ था, फिर जैसे ही महाराज परीक्षित लेफ्ट, कलयुग स्टार्टेड इट्स विंग्स। यस। राइट राइट। और प्रभु जी नाम का जो अभी आपने बताया, नाम 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 में 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो जो हम करते हैं नाम भास से, क्या बोलते हैं उसको, जो हम जिसमें हम ये 3 स्टेजेस है, नाम भास, यस नाम प्रभु जी, अपराध, एक सॉरी नाम अपराध, नाम भास, शुद्ध नाम, ऐसी कुछ यस क्या क्या प्रभु, यस क्या क्या प्रभु। होती है, एक बार बताएंगे? तो जी नाम अपराध जब हम ऑफेंसेस के साथ चैंटिंग करते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर प्रभु जी एग्जैक्टली, मे बी रॉनी प्रभु इज देयर, ही कैन आंसर। और नाम आभास में मुझे नहीं पता प्रभु जी क्या डिफरेंस। सो वी ट्राई टू अवॉइड ऑफेंसेस प्रभु जी, नाम आभास में हम फोकस करने लगते हैं थोड़ा सा, हम ऑफेंसेस से दूर जाने लगते हैं, बट नॉट 100%। और शुद्ध नाम तो फिर ऑफेंसलेस है प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yeah. So we'll end the session here. Vancha kalpatrubhascha kripa sindhu bhayavcha patita naam pavnebhyo vaishnavebhyo namo नमः। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।